If you want to speak English fluently, stop thinking in Hindi. Think in English directly. Let me show you how. 5 steps to speak English fluently. Let's start. First step, think in English. Don't translate from Hindi to English. आप मत सोचिए कि मुझे पानी चाहिए, आप डायरेक्ट सोचिए आई नीड वाटर। जो भी सोचना है सीधा इंग्लिश में सोचिए। दिस रिड्यूस हेजिटेशन एंड इंक्रीज फ्लुएंसी। Next step, use helping verb correctly. If you want to sound advanced, your sentence structure must be correct. Use helping verb. For example, do and does. Do you speak English? Does she study? Did you watch the movie? Has finished her work. This small correction make your English sound polished. Third step, replace basic word with advanced word. Very happy, delight. I am delighted to meet you. Very beautiful, gorgeous. This place look gorgeous. Very important, crucial. This step is crucial for fluency. ऐसे ही आप एडवांस वर्ड का यूज़ कीजिए। नेक्स्ट स्टेप, स्पीक कॉन्फिडेंटली इवन स्मॉल सेंटेंस। कॉन्फिडेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वोकेबलरी। स्पीक स्लो बट स्पीक क्लियरली। एग्जाम्पल, डेली लाइन्स, आई एप्रिसिएट योर प्रैक्टिस। कुड यू प्लीज रिपीट दैट? आई डिडंट कैच दैट क्लियरली। आई विल गेट बैक टू यू इन मोमेंट। दैट सेंटेंस मेक यू साउंड प्रोफेशनल। ऐसे ही आप अपने डेली लाइफ के बोले जाने वाले वर्ड को इंग्लिश में बोलने का कोशिश करें। लास्ट स्टेप, प्रैक्टिस मिनी कन्वर्सेशन। Are you learn English? Yes, I practice daily. That's great. How do you practice? I think in English, speak slowly and use advanced vocabulary. Practice this small conversation every day to improve fluency quickly. Remember, fluency is a journey, not a race. Speak every day, even if it's just for 2 minutes. योर इम्प्रूवमेंट विल बी विजिबल विद इन 30 डे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स।